पहले कर दिए। नहीं मैंने भी मेहनत की, मैंने इधर किया है इसको। नहीं नहीं थोड़ा सा इधर, ताकि उन्हें बच्चों को भी दिखाई दे। मैं नहीं दिखती ना। थैंक यू। बस आज और भी कम, तो फिर तो एक ही आएगा कुछ दिन बाद। So I gave you homework last class. Sukriti, Shalini, Ragini, Anjali, and Akriti. If you guys unmute yourself. Okay, so we were doing features of Indian society last class. क्या कुछ किया था लास्ट में? We finished this. Okay. So we'll be doing features of Indian society. क्या क्या हो सकते हैं बिना ऊपर देखे, just in pointers. हाँ, please. The caste is divided into sub-castes. And we have different hierarchies and In the caste itself. yeah. For example, Kamash, Shudra, Vaishya, Shudra, and Panchmat. Panchmat are the untouchables. ठीक है, और ठीक है, और बहुत rigid है इंडियन सोसाइटी, जैसे अगर मैट्रिलिनियल है तो प्रॉपर्टी राइट्स मेल होते हैं, और मैट्रिलिनियल में कुछ है जो काफी ट्रेंड हो गई, उसमें प्रॉपर्टी मतलब रिजिड कैसे है? चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि इट्स हेरिडिटरी एंड इट्स रिजिड, कि एक बार जो कास्ट में बोर्न हुआ, ठीक है, इंडिविजुअली उसे, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, व्हाट्स योर नेम? अंशुमन, थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो हेरिडिटरी है, ठीक है, इसे चेंज करना मुश्किल है। क्यों चेंज करना मुश्किल है? बिकॉज इफ यू आर समवन हु इज बोर्न इन ब्राह्मण फैमिली, तो यू विल बी कंसिडर एज अपर कास्ट, ठीक है। दलित में हुए तो यू विल बी कंसिडर एज लोअर कास्ट, ठीक है। और उसी बेसिस पे लॉज वगैरह डिवाइड है, रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, अनटचेबिलिटी वगैरह। एक एग्जांपल सेट करते हैं, ठीक है, तो राइट इट डाउन। ठीक है, शादी के बाद चेंज हो रहा है। दिस शोज व्हाट? पिछली क्लास में 2 टर्म्स पढ़ी थी हमने, those 2 words. हाँ, if you are marrying in other caste, so this shows what? So write it down. क्या? Doubt. The caste system is one of the oldest and most unique features of Indian society. One of the oldest and most unique features of Indian society. Hello. Sakriti, Shalini, Palak, Anjali, Akriti, please write in the chat box. It can be defined as hereditary group which means a person is born into a caste
which means a person is born into a caste, a person born into a caste and cannot usually change it. So is there any example that you can give me that you have seen that yes, this is based on the caste? Any live incident or example that you have seen? Cannot usually change it. Any incident that you have seen that you think that yes, this falls in this category? So have you seen any incident of yours, like from your personal life, that yes, this comes under this category, where you've seen that yes, caste system is still existing? In my life, I've heard from someone. In the class, when we discussed about the caste system, my friend grandmother usually asks someone's caste while accepting her enrollment, like according to their caste, then only she allows it. Got it. So, like, I'm sure that you have witnessed this, that those Dalit people still keep utensils different for those, right? For lower caste. तो हाँ, और उन्हें साथ में बैठने नहीं देते. So these differences, ये छोटे छोटे incidents बताते हैं that these are still existing in the India, right? So हाँ हाँ. So Akriti says it can be defined as hereditary group, which means a person is born into a caste and cannot usually change it. Yes, Akriti, can you give me an incident, an example? So what's segmental division? Caste is divided into a sub-caste category. Yes. So basically there are small groups called caste and jatis, right? तो उस basis पे division होता है. So write one line. And it's acquired by birth. Right? So the division is still visible today as caste. This division is still visible today as caste. Often plays a role in marriage alliances, village social life, and even politics. Marriage alliances, village social life, and even politics. So Akriti says that example can be in the traditional caste system, a person born into a Brahmin family is expected to follow occupations related to priesthood, teaching or scholarship, and a person born into a Dalit family might be restricted to certain mental job regardless of their personal abilities or aspirations. Agree? What? Hmm. Okay. So next is hierarchy. क्या है ये ladder system? Yes. So basically division है, ठीक है? ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, ठीक है? Write it down. इसमें से कोई भी एक ऐसी टर्म नहीं कि समझ में नहीं आया हो. समझ में आ रहा है? Till now. पक्का? Example, priestly work and teaching were, yeah, priestly work and teaching were considered pure
considered pure, while jobs like considered pure, while jobs like cleaning, drains, or handling dead animals were considered impure. Handling dead animals were considered impure. So even today we can see that inner dining or inner marriage is, it's still stopped. We are not doing that. Why is it so? Because hierarchy is still existing and we're still following this practice. Inner dining, that we are not like, आप किसी दलित फैमिली के साथ खाना पसंद करोगे? But it can be seen still, है ना? Utensils का division है, खाना साथ में बैठ के नहीं खाते हैं. Even we are not allowing them कि हम साथ में बैठ भी जाएं. ठीक है, इतना भी division है. तो write it down. Even today, caste hierarchy is indirectly reflected in rural India. Even today, caste hierarchy is indirectly reflected in rural India, where some communities still refuse to allow interdining or intermarriage between caste. Interdining or intermarriage between caste. Akriti, which last line? What? Interdining or intermarriage between caste. Write one more line. That under scheduled caste and scheduled tribes, under scheduled caste and scheduled tribes act, these activities are illegal. So if you are given a power at certain position, तो क्या changes लेकर आओगे? जैसे ठीक है, और क्या देनी पड़ेगी? अच्छा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. ठीक है, ओके. तो बेसिकली अवेयरनेस होगा. अवेयरनेस के अलावा और कुछ? Major and upper level senior set with them and we have to lead by examples. Officials needs to spread the awareness, just set with them so that they are prepared Equally. better. Anyone else? Is this your first class? What's your name? What? Megha. अच्छा, last class you were here. Example कुछ? Education provide कराओगे, okay? Community work करवाएंगे. Okay. The division is still often visible today. Caste plays an important role. ठीक है. Next we have civil and religious disabilities. Yes.
Hmm. president. So one now don't allow him to enter the temple just because he was from Syrian caste. ठीक है. तो अगर if we are talking about caste, then who is the personality or the leader that comes in your mind? Yes. So what will you write under him? He also wanted to have a separate Yes. So are you aware of his caste annihilation? What was it? Then he fought to study. Sitting outside class, he have gained education and he fought for the betterment of Dalits and SC/ST as well. That is why you can see the reservation bill which is there. It was done by B.R. Ambedkar. Okay. He also wanted the secretary for the Dalits. Okay. So that they can be included in parliament and because the person who have power and money, they are respected. In today's society, they are respected, whether they be of any caste. So he ठीक है. wanted that kind of thing. We can take an example of like mayor of New York. He registered Dr. Ambedkar's birthday as day in New York. You guys know a lot about Ambedkar. ठीक है. Good. So Akriti, the line is this division is still visible today as caste often plays a role in marriage alliances. वो आपको भी प्रॉब्लम है इस वाली लाइन में? ये नई लाइन नहीं है, वो प्रीवियस लाइन है, वो छूट गया उसका. This division is still visible today as caste often plays a role in marriage alliances, village social life, and even politics. Okay, what's next? Hmm. The leaders protested and then they were given a chance to enter the temple. Hmm. It was so amazing. तो क्या क्या किया गया है अब तक to remove these? Hmm. Government of India in 1935. That was happened to widening the scheduled caste and scheduled class instead of the main backward relatively backward. ठीक है. Write one line. India has made significant progress through reservation policies, social reform movements, and constitutional safeguards. Caste divisions still influence marriage, politics, and social life. What is endogamy?
Why was it made? ठीक है. Is there any keyword या फिर कुछ भी that you didn't understand? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? Simple है ना? ठीक. So write down. In modern urban India, in modern urban India, intercaste marriage are slowly increasing. Intercaste marriage are slowly increasing, especially in cities among educated youth. Increasing, especially in cities among educated youth. Government initiatives like intercaste marriage, incentive schemes in Telangana. Incentive schemes in Telangana. So basically, this offers support to couples to encourage them for the intercaste. Okay. नहीं हम बता रहे थे. ठीक है. तो बेसिकली एंडोगेमी हायर कास्ट के लिए है. ठीक है. सो दैट प्योरिटी मेंटेन रहे. ठीक है. और इसीलिए इसके अगेंस्ट कुछ कुछ चीजें बनाई गई है बाय गवर्नमेंट और अभी और इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि एक्सोगेमी बढ़े. ठीक है. एंडोगेमी समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम एंडोगेमी में? ये वर्ड कोई नहीं भूलेगा एंडोगेमी को. सो बेसिकली एंडोगेमी इसलिए है. अच्छा जो लिखवाया है करंट अफेयर वाला, दैट इन मॉडर्न अर्बन इंडिया intercaste marriage are slowly increasing, especially in cities among educated youth. Government initiatives like the intercaste marriage incentive scheme in Telangana. आगे समझ में? Okay. So next we have untouchability. कौन बोलेगा? एंडोगेमी हायर कास्ट को बेनिफिट है इसमें, उनकी प्योरिटी मेंटेन रहेगी कि अगर ब्राह्मण फैमिली में कोई है तो वो वहीं पर शादी करेगा, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी. हायर जो कास्ट होती है सिर्फ उनको बेनिफिट मिलता है इस चीज से. एंडोगेमी क्या है? एक्सप्लेन करो. नहीं अब बताओ ना क्या है एंडोगेमी. नहीं इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते. बेसिकली ये जो हायर कास्ट होती है उन्हीं में जो प्योरिटी मेंटेन रहे उसके लिए है. अब क्या है एंडोगेमी बताओ. अपनी ही कास्ट में शादी करनी है. ब्राह्मण में शादी करेगा, दलित का कोई अगर है तो वो दलित में ही शादी करेगा. हाँ पैसे मिलेंगे, वही तो बताया मैंने. हाँ तो अब हो रहा है इंक्रीज, अब तो देखने को मिलता है ना. बट तो आपको क्या लगता है रूट कोज क्या है इस चीज का? लाइक व्हाई इज इट स्टिल एग्जिस्टिंग? हर एक चीज का ना हमारी ह्यूमन टेंडेंसी, हमारी ह्यूमन आदत बन चुकी है कि हम लूप होल निकाल लेते हैं. डजंट मैटर हाउ मच इनिशिएटिव गवर्नमेंट इज टेकिंग, बट हम कहीं ना कहीं से उस लूप होल को निकाल के हम वही चीज फॉलो करेंगे जो हमें फॉलो करनी है. एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हायर कास्ट, तो उनके अंदर तो इतनी सारी इनिशिएटिव स्पेशली अभी गवर्नमेंट ने, मैं लेकर आऊंगी अगर 10 पॉइंटर्स मुझे मिले तो इतने सारे इनिशिएटिव्स हर सिटीज में निकाले हुए हैं. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन. और वो अगर नहीं हो पाएगा, लाइक आएगा आस्क यू कि अगर आपको पावर मिलती है तो आप खुद से क्या करोगे? बट नन ऑफ यू सेड कि मैम मैं पहले खुद को चेंज करूंगा. बोला था? अच्छा ठीक है. हाँ
तो जब भी आप बात करते हैं ना टू चेंज सोसाइटी, फर्स्ट यू शुड चेंज योरसेल्फ, क्योंकि वो रूट कॉज वही खुद से ही निकल कर आता है। ठीक है, हम बोलते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, बट व्हेन दैट सिचुएशन अराइजेस, व्हेन यू फेस दैट डायलेमा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्ट। ठीक है, आगे समझ में एंडोगेमी, कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना? पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी, नहीं होगी ना? पक्का? ठीक है, समझ में आ गया? ओके, आकृति, आई होप दैट यू हैव रिटन दिस पॉइंट। नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी, कौन बोलेगा इसके बारे में? यस, नहीं, अब कोई और बोलेगा। यू। हम्म, ठीक है, और कोई? हम्म, 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 हाँ, और ये चीज मतलब तुम लोग जो रास्ता है, जो अपर कास्ट का जो रास्ता, तुम वो चीज वो फॉलो भी नहीं कर सकते हो, वहां से भी नहीं जा सकते हो मैरिज में। हाँ, हाँ, इतना ज्यादा, और मुझे लगता है अभी भी फॉलो होता है। डू यू एग्री? हम्म, हम्म, और एक अपर कास्ट के लिए, हाँ, दिस इज स्टिल एग्जिस्टिंग। हम्म, हाँ, हम्म, हाँ, हम्म, ठीक है, तो राइट इट डाउन। हम्म, कैसे, क्या? हाँ, अच्छा, कोटा की बात नहीं हो रही है। हम्म, किसमें? आकृति, अंजलि, why you are not replying? I asked you a question. हाँ, हाँ, it was a big issue. हाँ, वही, ये कैसा सवाल है क्लास? Okay, write it down. A Dalit could not enter. A Dalit could not enter a Brahmin household. A Brahmin household or draw water. Shalini, Sukriti, Ragini, Palak, all of you, I hope that you have understood what endogamy is. Okay. Is there any confusion or anything you want to ask? Where was I? Draw water from a common well. From a common well used by upper caste. Used by upper caste. So untouchability, next line, is now illegal under Article 17. Under Article 17 of the Indian Constitution. Untouchability वाला ना? Untouchability is illegal under Article 17
of the Indian Constitution. Next, manual scavenging. I think last class में someone discussed about it. You did. हाँ. किसने बताया था? किसी एक ने और बताया था ना? Someone else also explained it. तो सबको पता है क्या है manual scavenging? Okay, write it down then. The prohibition of employment. The prohibition of employment as manual scavengers and their Rehabilitation Act 2013. Rehabilitation Act 2013. Officially banned this practice and promised rehabilitation and alternative employment opportunities for affected workers. In the last class, I told you that you have to write the current affairs. Written where? और किसने लिखा करंट अफेयर्स? किसने लिखे करंट अफेयर्स? लिखे हैं? और गुड. और किसने लिखे हैं? Feels like you are in 7th class and I'm the teacher of them. I'll check one of your. तो मतलब करंट अफेयर्स हर रोज जितने जो स्पेशली टर्म्स पढ़ाई जा रही हैं सर्च करो गूगल पर, ठीक है? उससे रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट्स मिलते हैं, जितने मतलब सारे नहीं, 3-4 इंसिडेंट्स मिलते हैं विच यू थिंक आर रेलेवेंट टू दैट कीवर्ड, मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग इट और राइटिंग इट समवेयर. ठीक है? हाँ, कर सकते हो. जैसे एंडोगेमी का है, ठीक है? तो एक्सोगेमी हम पढ़ेंगे, तो उसके से रिलेटेड जितने भी हैं जो मैरिजेस हुई हैं विच केम इन हाइलाइट्स, ठीक है, ऐसे आते रहते हैं छोटे मोटे, तो वो आप लिख लो कहीं पर, ठीक है? एंड विल डिस्कस इट इन द क्लास. तो किसी ने लिखे हैं अभी? सबने लिखे हैं ऑलमोस्ट. हाँ, इसके 2 रीजंस हैं. पहले यू विल बी अवेयर ऑफ द इंसिडेंट, सेकंड उसका जो टर्म है आपको वो लॉन्गर टाइम तक याद रहेगा, ठीक है? और वो थोड़ा होता है कि जब हम साइकोलॉजिकली जब हम किसी स्टोरी के साथ पढ़ते हैं तो हम उसे ज्यादा टाइम तक याद रखते हैं, हाँ, कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में. करंट अफेयर्स दिखाओ सब. डिटेल्स भी पढ़नी है. हेडिंग 4 लाइन की होती है, 4 वर्ड्स की होती है. विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी? बेसिकली वो जो मैं करंट अफेयर्स आपको बोल रही हूँ, द रीजन बिहाइंड इज विल बी गोइंग विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है? सब कुछ याद करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आई एम आस्किंग यू टू कम विद द स्टोरी ताकि वो आपको याद रहे कि हाँ, इस वर्ड के साथ वो इंसिडेंट था एंड आई रिमेंबर दिस कीवर्ड विद दैट सर्टेन स्टोरी. इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ करंट अफेयर्स के लिए. आगे याद? हाँ. आकृति, अंजलि, शालिनी एंड all of you, I hope that you are writing current affairs somewhere. Loud. These.
हाँ ठीक है। नहीं, मेक श्योर जो भी आप करंट अफेयर्स रीड कर रहे हो ना, दैट यू नो द बैक स्टोरी ऑफ इट। ठीक है, लिखना तो तुम्हें अगर 2 लाइन में लिखना है, लाइक ही सेड मैम हेडलाइंस चलेगी। इफ यू कैन रिमेंबर द बैक स्टोरी ऑफ दैट हेडलाइन देन इट्स फाइन। हाँ, 2 वर्ड्स में भी अगर तुम वो स्टोरी याद कर सकते हो तो ठीक है, दिस वन। ओके। हाँ ठीक है, परफेक्ट। दीज करंट अफेयर्स आर फॉर यू, मेरे लिए नहीं है। मतलब अगर आपको समझ में आते हैं तो एक वर्ड में भी लिखोगे तो चलेगा मुझे। मतलब इसकी बैक स्टोरी पता है ना? हाँ तो बस परफेक्ट, ठीक है। कहाँ पे? कौन सा? एक सेकंड। हाँ, गुड। और किसने लिखा है? लिखा है? समझ में आता है ना कि बैक स्टोरी ये है एंड दीज आर द कीवर्ड्स दैट आई हैव टू गो थ्रू। हाँ मतलब ठीक है, दीज करंट अफेयर्स आर नॉट फॉर मी, यू विल बी रीडिंग इट एंड यू विल बी कनेक्टिंग इट लेटर। हाँ परफेक्ट। दिखाना है किसी को? कहाँ से लिखा? खुद? हाँ, न्यूज मिलती है, केस स्टडीज मिलती है। बस मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना, यू हैव सर्टेन स्टोरीज टू कनेक्ट विद, ठीक है, ताकि लॉन्गर टाइम के लिए याद रहे एंड यू डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कीवर्ड्स। तो इज देयर एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड अब तक? कुछ भी समझ में आ रहा है ना? पक्का? क्या? ओके, so next we have caste based violence. Any incident that you have just mentioned? हाँ ठीक है। आकृति, अंजलि, why I'm not getting reply from here? हाँ क्या है? हाँ, last class में भी you mentioned about it. What was it? और she was raped by multiple upper class women और बहुत रेप का रीजन ये था कि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर रही थी, हाँ साथ साथ और भी वुमेन को अपलिफ्ट कर रही थी। ठीक है। और she was raped by upper caste males वगैरह। और जब एफआईआर करने तो पुलिस ये बोल उसको भगा दिया कि मेरी सकता तुम लोग सुधर ही सकते हैं upper caste males। और उसके बाद उसको टू फिंगर टेस्ट जो था करने को बोला गया था, उसके बाद से टू फिंगर टेस्ट हाईलाइट में आया था और अब जाके उनको 1 साल या 1.5 साल पहले उनको मिला है जस्टिस। In the last class I gave you homework. क्या था? हाँ, सबने लिखा है? नहीं लिखा? Why? नहीं, मैंने लिखने को बोला था ना।
मैंने तो पढ़ ली थी न्यूज, मैंने देख ली थी मैम, बट लिखी नहीं है। लिखा है, लिखा है। अच्छा, दिस इज योर फर्स्ट क्लास ना? आपने लिखा है? हाँ। क्यों? मैं ज्यादा होमवर्क देखती हूँ। मन हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मतलब कल, कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस दैट यू विल बी राइटिंग इट? हाँ प्लीज। She called me at evening. हाँ। But it's so confusion. Okay, so you have to confuse me. So now after question is why Nepal cannot why the incident that took out in Nepal cannot हैपन इन इंडिया, यस। हाँ। I was saying कि demographically Nepal is possible. मैम प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर को। नहीं नहीं सर, मैम करेंगे ना, मैम प्लीज कर दीजिए। The question is कि जो incident Nepal में हुआ था वो India में क्यों नहीं हो सकता? और ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। लिखा किस किसने? हाँ, बट दोनों पर्सपेक्टिव लिख सकते हो तुम, दोनों तरफ पॉइंटर्स बन सकते हैं। तो इफ यू हैव डन द वन पार्ट, दूसरा पार्ट भी करके आ जाना कल, ठीक है? आई चेक द बोथ, ठीक है? राइट इट डाउन। Caste discrimination often leads to violence, especially when Dalits, assert their rights or participate, एक सेकेंड, Akriti, Palak, and all the students who are online, I just mailed you my email ID. So make sure that you are submitting your assignment to me tomorrow on this mail ID. Especially when Dalits assert their rights or participate in intercaste marriage. Such incidents include attacks on Dalits demanding land rights. Incident includes attacks on Dalits demanding land rights, education, or social justice. क्या?
Who said arts? Huh? She meant कि basic rights समझाए जाते हैं ना arts में, sociology, pol science. Okay, so policy of caste-based reservations लिख लो के नीचे the other pointer, policy of caste-based reservations. What are the policies that are made to reserve caste? Write it down. And make sure that each one of you online students are submitting your assignment to me. Okay, to address this historical inequality, to address, तुम लोग बहुत स्लो लिखते हो क्लास में, बाकी क्लासेस में कैसे करते हो? धीरे धीरे. अभी तो सुबह हुई है. To address historical inequalities, the Indian government introduced caste-based reservation. सीधे होकर क्यों नहीं बैठते तुम लोग? Caste-based reservation as an affirmative action policy. As an affirmative action policy. If you are giving government exam, don't you think that you guys should change your personality? कमर सीधी करके बैठना, आवाज तेज में बोलना. How will you learn that? This system reserves a certain percentage of point number 1, seats in educational institution, seats in educational institutions. Second is government jobs. Third is legislative representation. Write another pointers, not third or fourth one, another pointers, another bullets. For SC, we have 15% reservations. For SC, write this. Jaldi. पढ़ के आती है वो. Yes. She is telling an incident, a case study, a current affair that I think you should listen. आवाज. So when you're telling a current affair, that make sure there is a location, ठीक है? Okay. Sub location. फिर उसके बाद name, if possible. If you are good with names, मैं नहीं हूँ तो मैं prefer भी नहीं करूँगी, but still. फिर उसके बाद if you can tell कि ये इस date का या फिर इस time का incident है, ठीक है? ऐसे थोड़ा सा कर करो. Next, और कुछ किसी को बोलना है? इसमें से किसी को प्रॉब्लम है? Endogamy, untouchability, caste-based reservations, understood? Yes. किस कौन सी?
वो कैसे फिट होगा इसमें? मतलब वो एग्जाम्पल फिल्म्स वाला समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ हाँ। अगर आप कोई इंसिडेंट बता रहे हो स्पेशली मूवी वगैरह का, हाँ, तो अगर कोई मूवी के एग्जांपल इफ यू आर पुटिंग, तो मेक श्योर कि पहले उसको एक्चुअल में समझाओ कि दिस इंसिडेंट हैपेंड एंड देन बेस ऑफ दिस इंसिडेंट अ मूवी इज मेड, और फिर उस मूवी का नाम लिखना है। सीधा मूवी का नाम नहीं लिख देना है। मूवी किसी इंसिडेंट पर बनी है, इंसिडेंट मूवी पर नहीं बना है, ठीक है? हाँ 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 हाँ, ओके। कौन लिख कर आया था वो नेपाल वाला होमवर्क दिया था मैंने आपके अलावा? किसी पढ़ के सुना दो। हाँ, इंसिडेंट नहीं, लाइक कि क्या चेंजेस हो सकते हैं नेपाल में, कुछ भी, कोई बात नहीं। हम्म, and plus the all the bureaucrats plus the politician, the executive part of the politician, they were involved in the corruption. So the major changes can be the appointment of a new system of bureaucracy, and the executive needs to be changed. ठीक है, और you wrote something about that ना, तो read it. See, I'm pushing you because like there will be time where you have to write fast and where you have to think about keywords, because जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं and we start writing, तो ना तो हमारी स्पीड मेंटेन होती है, और जो भी पढ़ के गए हो इट विल बी वेस्ट. व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट थिंक एट दैट मोमेंट, प्रेशर इतना ज्यादा होता है. तो आई एम प्रेशराइजिंग यू इन द क्लास ओनली, ताकि, और मैं कीवर्ड्स इसलिए पूछती हूँ ताकि तुम्हें जल्दी जल्दी याद आए. ठीक है, बोलिए. नहीं समझ आया सर, स्लो स्लो. This protest shows the power of youth cooperation, the cooperation with the digital age, and the need of more inclusive government with youth participation in it. And a way forward to look for the new government following 2026 by the first year Karol. क्या है? मतलब एक बेसिक चीज बनाई, उसका नाम ही भूल गए आप. आगे. Also, I'm sorry for interrupting you. Make sure that you are speaking in the class. ठीक है, कोई फायदा नहीं है if you are opting for this paper. ठीक है, तो अगर आपकी पर्सनालिटी वैसी नहीं है that you can speak in the public, ठीक है, you are sitting straight, your voice is loud, पर्सनालिटी में नहीं आएगा, तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे, कभी भी नहीं पढ़ पाओगे. तो जब दिमाग में जिस मोमेंट पे आया था that yes I'll be opting for this paper, I'll give examination of this and I'll have certain power, I'll go with this certain position, तब तुम लोगों ने सोचा होगा ना कि मेरे अंदर कुछ तो कैपेबिलिटी है. तो वो चीज मुझे क्लास में क्यों नहीं दिखती है? एक तो पहले शर्माना बंद करो कि क्लास में सही गलत होगा, बिकॉज देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, स्पेशली द मोमेंट यू डिसाइडेड दैट यू विल बी ऑप्टिंग दिस एग्जामिनेशन, वो वहीं पर खत्म हो गया. ठीक है. दूसरी चीज, मेक श्योर दैट योर वॉइस इज वेरी लाउड, ऐसे गंदी वाली, ऐसे स्क्रीची वाली वॉइस नहीं, मतलब इट्स लाउड एंड क्लियर. ठीक है. दूसरी चीज, सुबह सुबह मत थका करो प्लीज, 8 बजे हैं अभी, कमर सीधी कर लो. अब रीड कीजिए. India can replicate the grassroots level of participation in the face of the insurmountable odds against the government, and Nepal can benefit from
India's stable government and oppose the Chinese oppression only. पता है जब आप लोग बैठते हैं, आप लोग बात करते हैं ना, वो तभी समझ में आता है कि आप कितने सीरियस हो पढ़ाई के लिए और कितना कोई नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट रीडिंग मोर एंड यू स्टार्ट राइटिंग मोर, ठीक है। नहीं लिखोगे इट वोंट हेल्प यू, कुछ फायदा ही नहीं है। आप यहाँ से बल्क में कुछ उठाकर लेकर जा रहे हो एंड द मोमेंट यू विल सिट इन दैट एग्जामिनेशन हॉल एंड यू स्टार्ट राइटिंग, सब भूल जाओगे आप वहां पर, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है। एंड दैट्स व्हाई आई आस्क माय स्टूडेंट्स टू टेल मी आंसर्स इन कीवर्ड्स, क्योंकि जब भी हम आंसर्स लिखते हैं तो स्टार्ट राइटिंग इन पॉइंटर्स कि ये मुझे पॉइंट्स ऐड करने हैं, और इसीलिए मैं कीवर्ड्स में समझाती हूँ। तो मेक श्योर आप भी उसी वे में याद कर रहे हो। स्टोरी का पर्पस ये है, करंट अफेयर का पर्पस ये है कि आपको वो कीवर्ड लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए याद रहे और कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अभी तक कुछ भी कोई कीवर्ड ऐसा है जो समझ में नहीं आया है? सब समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो विल वाइंड इट अप। आज तो मैंने होमवर्क भी नहीं दिया है, कुछ जो पहली क्लास का था वही है, ठीक है। हाँ ठीक है। कुछ और यू वांट कि मैम कुछ ऐसे पढ़ा दो वैसे पढ़ा दो, इज देयर एनीथिंग? Indian society basically answer writing. बट इंडियन सोसाइटी इज अ सब्जेक्ट जो देयर आर सब्जेक्ट्स जो बाकी सब्जेक्ट्स में भी कहीं ना कहीं मिलते हैं। इट्स लाइक द बेसिक फाउंडेशन, या इट्स अ फाउंडेशन। आप बेसिक नहीं समझोगे कि सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या चल रही है तो आगे की फ्रेमिंग नहीं होगी, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग दिस एग्जामिनेशन, दिस पेपर वेरी सीरियसली एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द रूट कोज कि प्रॉब्लम्स कहाँ से अराइज हो रही है, ठीक है। आगे भी बहुत हेल्प करेगा यार। And start writing current affairs, please. Anything else you want to ask? Then, Akriti, Anjali, anything you want to ask? I hope that you understood whatever is taught in the class. Okay. Okay, Akriti.